ऑडियो को म्यूट मोड पे रखें और अपने वीडियो को भी आप स्विच ऑफ रखें। जैसे ही आप बोलेंगे उस टाइम आप अपना ऑडियो और आप अपना वीडियो ऑन कर लें। और अगर आपको कोई स्लाइड या कोई चीज़ अगर आप सोचते हैं कि आप वो दिखाना चाहते हैं सबको, तो आप उसके लिए कह सकते हैं। सो आई विल गिव यू द शेयरिंग राइट्स ऑल्सो एंड देन यू कैन शेयर। ओके, सो वी विल बी जस्ट स्टार्टिंग विद इन 2 to 3 minutes। तो बस हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि हमें अपना ऑडियो म्यूट मोड पे रखना है, so that we can have the better listening experience. Thank you very much. I suppose this is 2 o'clock and we are now in a position to start, so that हम इसको अच्छी तरह से complete कर पाएं। So हम इसको मेरे ख्याल से स्टार्ट हमें करना चाहिए। ऑनरेबल Additional Director Higher Education, Honorable Principal of the College, Professor Gupta and Professor I.K. Mangal, they have joined. So I would just seek your permission, sir. Should I start the event? Okay. Okay, thank you very much, sir. So I'm just going to start. Professor Devashish will join in between. So when Professor Devashish will join, then he'll speak with us. So we're just starting with the event. So first of all, I welcome you all on this platform, which is hosted by Government Mother Science College Ujjain. This is a collaborative event in which many prestigious colleges of Madhya Pradesh are participating, और ये सभी महाविद्यालय काफ़ी कहना चाहिए रेप्यूटेड महाविद्यालय हैं और उनके आप छात्र हैं। तो आप ऐसे रेप्यूटेड महाविद्यालय के रेप्यूटेड छात्र आज हमारे साथ हैं। This is an event, Professor Devashish has also joined. So this is an event of its own kind where we are just having this student exchange program in an online mode, where we are listening to the voices of the students, that what students think about this very, I can say that this very sensitive issue of drug abuse. Today we all know that आज अंतर्राष्ट्रीय जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ड्रग डे अगेंस्ट ड्रग यूसेस है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये जो एक बहुत बड़ी त्रासदी है ह्यूमन रेस की, ड्रग्स की, किस प्रकार से हम बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, और ये ड्रग एब्यूज और इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों को रोका जा सकता है। So UNO, this is the International Day, and UNO has dedicated this day of 26 June for this for against the drug abuse, and this is known as International Day against drug abuse and illicit drug trafficking. आज ही के दिन 1989 से इस दिवस की शुरुआत हुई और तब 26 जून एक्चुअली 26 जून कमेमोरेट्स द ये जो ओपियम ड्रग ट्रैफिकिंग होता था, ओपियम ड्रग ट्रैफिकिंग को जो चाइना से होता था, इलिसिट ओपियम ड्रग ट्रैफिकिंग, उसको रोका गया। और उसको रोकने के लिए जो दिन था वो 25 जून था। सो यूएनओ डिक्लेयर्ड दिस डे 26 जून एज they selected this day as to be celebrated as the International Day against Drug Abuse. आज की थीम एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है, जहाँ पे ये कहा गया है that the official theme which is declared is people first, stop stigma and discrimination, strengthen prevention. यूएनओ और सभी जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटीज हैं, सारे जो समाज है, वो आज इस बात पे बात कर रहा है कि जो ड्रग प्रॉब्लम है, नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इशू एंड दिस ड्रग प्रॉब्लम अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, not only the youth but also the elderly people, they are also affected by this problem. और इसकी वजह से जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन आता है, these people are facing this stigma and discrimination. But this year's theme, this says that now we have to recognize the importance of taking people-centered approaches. We have to take this message forward in the society, and youth can do that. You should raise awareness about the negative impact of stigma and discrimination on people who use drugs. These people should not be hated, they should not be punished. Basically, they should be counseled. Basically, they should be treated with passion and empathy so that they can come out of this stigma, which is these drugs.
your youth can raise, and you have to raise awareness about the AIDS and hepatitis epidemics, which is prevalent among people who use drugs, and expand, and you have to expand and strengthen HIV and hepatitis prevention programs. You have to promote evidence based voluntary services for all people who use drugs, educate about drug and disorders, which are, and the available treatments about drugs and disorders. So this is all which you can do, which you people can do. और उससे भी पहले ज़रूरत है आपकी उस आवाज़ को सुनने की, आपके उन विचारों को जानने की, जिनके द्वारा आप क्या आपके मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, कैसे समाज को इन बुराइयों से बचाया जा सकता है। तो इसी के लिए आज इस प्रोग्राम को लेकर के, ये जो स्टेट वाइज एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, ऑनलाइन मोड में अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं हैं, इसलिए हम इस प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। अगले वर्ष जरूर हम इसे ऑफलाइन मोड में करेंगे, जब आप और हम सब साथ मिलकर बैठेंगे और जब हम इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को, इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य को निवेदन करूंगी कि वो हमारे उपस्थित अतिथियों का एक फॉर्मल वेलकम नोट उनको प्रेषित करें। वेलकम सर। सभी को नमस्कार। कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट्स के पूरे प्रदेश से इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे छात्र, मैडम कल्पना सिंह इस कार्यक्रम के सूत्रधार, कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर अर्पण भारद्वाज, बहुत सारे टीचर्स और छात्र। निश्चित रूप से ये जो आज दिवस हम मना रहे हैं, यद्यपि ये दिवस नहीं, एक शपथ है। हमें शपथ यह लेना है, विशेषकर युवा पीढ़ी को, कि हमें किस तरह से नशे से दूर रहना है। एक पार्ट है नशा, दूसरा पार्ट है स्मगलिंग। और आपको ये पता होगा कि नशा एक तरफ कहीं आपके स्वास्थ्य को, घर को, परिवार को, राज्य को, आपके पॉकेट को, सारे आयामों से नेगेटिवली आपको जो है लॉस पहुंचाता है। दूसरी तरफ जहां हम बात स्मगलिंग की करते हैं, तो ये आपको पता होगा कि चूंकि इस दिन की शुरुआत जो चाइना में ओपियम की स्मगलिंग को लेके हुई है, और आपको ये पता होना चाहिए नई पीढ़ी को कि स्मगलिंग जो एल्कोलाइड्स के अंतर्गत आते हैं, एल्कोलाइड्स की स्मगलिंग जो है उसमें एनडीपीएस के अंतर्गत जो है बेल का प्रावधान नहीं है। यदि आपके पास में 10-20 ग्राम की भी ओपियम मिल जाती है अनाधिकृत रूप से, तो आपकी 6 मंथ तक बेल नहीं होती है। और यदि आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो हर तरफ से इस कार्यक्रम के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि युवा पीढ़ी और समाज जो है इससे अवेयर हो, ताकि इस तरह की जो प्रवृत्तियां जो अधिकतम हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी के साथ साथ में कई लोग जो है ड्रग एडिक्ट आज हो चुके हैं। तो ड्रग एडिक्शन जो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि एक बार आप अल्कोहल या अल्कोलाइड्स को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और हम देखते हैं कि कई मौकों पर व्यक्ति चोरी करता है, पकड़ा जाता है, क्योंकि वो नशे का आदी हो जाता है। तो इस 26 जून को सेलिब्रेट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि युवा पीढ़ी में एक अवेयरनेस आवे और नशा मुक्ति और तस्करी से किस तरह से बचा जाए, हम किस तरह से शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी करें। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रदेश स्तर के जो चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके छात्रों की भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया। तो इस मौके पर मैं जितने भी कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट्स के छात्र हैं, इन सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये उनसे अपेक्षा रखता हूँ, ये उनसे वचन चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम से हम निश्चित रूप से प्रभावित होकर, यदि कहीं हम में टेंडेंसी इस तरह की होगी, तो न केवल उस टेंडेंसी से हम छुटकारा पाएंगे, हमारे घर परिवार में, समाज में इस तरह से यदि
हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, परिवार में यदि किसी भी तरह की ये टेंडेंसी किसी में है तो उसे भी हम अवेयरनेस कार्यक्रम देंगे। और डेफिनेटली इस वर्ष ये कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में है। नेक्स्ट ईयर से हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर हम ऑफलाइन मोड में करें, उसकी रैली निकालें, एनएसएस के बैनर पर अवेयरनेस कार्यक्रम रखें, साथ ही नशा तस्करी से जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, दूसरा स्वास्थ्य के अलावा जो है परिवार की प्रॉब्लम, इसके अलावा आईपीसी सीआरपीसी की प्रॉब्लम, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो हर आयाम पर आपको निगेटिवली कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। नशा यदि ड्रग्स जो है उसके दो एस्पेक्ट है, यदि आप उसको मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं तो इट इज ब्लेसिंग टू द ह्यूमन काइंड। जैसे ओपियम, ओपियम का नाम लेते ही बहुत बड़ी एक बात आती है, लेकिन जैसे आपको पता होगा कि ओपियम का जो प्रोडक्ट होता है जो मेडिसिन में काम आता है, दैट इज कोडिन फास्फेट। तो कोडिन फास्फेट जो है, कोडिन फास्फेट का उपयोग अक्सर आपने देखा होगा कि खांसी की दवाइयों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इस यदि आप इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है जिनका मेडिसिन में उपयोग नहीं होता है वो नशे के रूप में होता है, तो यदि आप इसका उपयोग मानवता के लिए करते हैं तो निस्संदेह ओपीएम के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका कैंसर थेरेपी में भी यूज होता है। तो हम नशे का उपयोग जो है मेडिसिन और रचनात्मक कार्यों में करते हैं तो डेफिनेटली इट इज अ ब्लेसिंग टू द ह्यूमन मैनकाइंड। अदरवाइज नशा जो है वो घर परिवार समाज पूरी तरह से सभी को बर्बाद कर देता है। तो आज इस इंटरनेशनल ड्रग डे के मौके पर मैं आप सभी से ये अपेक्षा और ये सहयोग, ये अवेयरनेस और ये शपथ चाहता हूं कि जहां भी हैं आप प्रदेश में, जिन महाविद्यालयों में भी हैं, अपने न केवल महाविद्यालय को बल्कि अपने अड़ोस को, पड़ोस को, अपने शहर को आप सभी जगह इस अवेयरनेस कार्यक्रम से लाभान्वित करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप लोगों ने सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. And with this, I would also like to extend a hearty welcome और बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ अपने साथ मध्य प्रदेश के तमाम जो हमारे शिक्षक और हमारे छात्र जो हमारे साथ YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं उनका भी, और इसके साथ जो कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स आज के इस लेक्चर में, आज के इस इवेंट में हमारे साथ साझेदारी कर रहे हैं, IEHE भोपाल, सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज भोपाल, इसके साथ ही कमला राजे गर्ल्स PG ऑटोनोमस कॉलेज ग्वालियर, होलकर साइंस कॉलेज ग्वालियर, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, भेरूलाल पाटीदार कॉलेज महू, जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय शुजालपुर और कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इन सभी महाविद्यालयों के छात्र आज हमारे समक्ष अपने अपने विचार साझा करेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी को। सर, आमंत्रित हैं आप। भारद्वाज सर, आप हैं यहाँ पर? हेलो, जी am I सर। audible now? यस सर, यस सर। जी सभी को नमस्ते। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के आयोजनकर्ता शासकीय माध्यमिक विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर VK गुप्ता साहब, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर कल्पना सिंह, कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के ही प्राध्यापक प्रोफेसर मंगल साहब, हमारे आज के कीनोट स्पीकर आदरणीय देवाशीष साहब और सभी महाविद्यालयों से सम्मिलित हुए युवा प्रतिभागी। यह बहुत मौजू है, आज की जो चर्चा है ये बहुत मौजू है और बहुत ही संवेदनशील ये विषय है। मुझे समझता है, जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि विद्यार्थियों के बीच में ये विषय जितना अधिक जाएगा उतना ही शायद समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि इसकी जड़ें यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि यद्यपि एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक समस्या है, परंतु इसकी शुरुआत, ऐसा मेरा निजी विचार है, इसको मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मेरा निजी विचार यह है कि शायद इसकी शुरुआत घरों से होती है। एक ऐसे वातावरण में पलता और बढ़ता हुआ बच्चा जो अपनी समस्याओं का समाधान घरौंदे में नहीं पाता, वह सारे रास्ते बंद देखता है। उसको प्रतीत होता है कि शायद अब कोई
इलाज ही नहीं है, तब वह इस तरफ मुड़ता है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, ड्रग एब्यूज जिसको हम कहते हैं। और मैं आपको बतलाऊं, यदि केवल इस विषय की संवेदनशीलता पर अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे आप यह जानकर आपको बहुत दुख होगा कि आजकल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के विज्ञापन उज्जैन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। पहले हम जब उज्जैन से इंदौर तक जाते थे तब एक ही था, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर था जो कि हमको दिखलाई देता था। अब उस रिहैबिलिटेशन सेंटर का साइज 3 गुना हो गया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अपना विज्ञापन कर रहे हैं। यह समाज का कितना कुरूप चेहरा ये विज्ञापन है, इसके विषय में कहना बहुत ही मुश्किल है। और उन परिवारों का दर्द जहां पर यह बीमारी प्रवेश कर जाती है, उन माता पिता की कुंठाएं, उन माता पिता का जीवन शायद मृत्यु से भी अधिक कठिन हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों से मैं ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि इन रास्तों पर जो बच्चे चलते हैं वे स्वयं तो अपने जीवन को समाप्त कर ही रहे होते हैं, साथ में वे एक घुन की तरह अपने परिवार को चट कर जाते हैं। और इसका जो दूसरा पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, वह आप अगर यदि जाने तो आप यह पढ़ते होंगे या जानते होंगे कि इसका मुख्य जड़ जो है वह आतंकवाद है। यह जो ड्रग एब्यूज को बढ़ावा देने की प्रकृति है, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रकृति है, यह जो रोग है, यह जो व्यवसाय है, यह मुख्यतः आतंकवाद को Hello, I think there is some problem with. Bharata, Yes, sir. Sir, yeah, मेरे ख्याल से there is a network issue. yeah, sir. The drawback of such online meets. Yes, sir. There is some issue with sir's network. Okay, let me call him. 2 minutes, sir. Let me. No issue, madam. Just I think this is. Hello, am I audible now, ma'am? Yes, sir. Yes, You're sir. audible. Now, Yes, sir. You're audible. थैंक यू सर। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि ये जो प्यार के दो बोझ से समाप्त हो जाने वाली जो समस्या थी, वो इतना विकराल रूप धर के एक विशाल दंश के रूप में परिवार में फैल जाती है, जिसका उपचार भी समाज खोज नहीं पाता। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बंद करो, इसका जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो हम बात कर रहे थे कि जो विद्यार्थी समुदाय यहाँ जुड़ा हुआ है, जो बच्चे यहाँ पर, जो कमलेश प्लीज अपना कैमरा बंद कर लीजिए। तो यह जो विद्रूपता है जो समाज में आ रही है, जो कुरूपता समाज में इस रोग की वजह से, इस प्रकृति की वजह से पनप रही है, उसको केवल युवा ही नियंत्रित कर सकता है। और जैसा मैं कह रहा था कि मैं अधिक बच्चों को सुनना चाहूंगा बजाय इसके कि मैं कुछ अधिक कहूं, क्योंकि वह क्या परिस्थिति होती है और वे खुद क्या सोचते हैं। यह मैंने अपनी सोच बताई कि जब समाधान अपनी समस्याओं का वे नहीं पाते हैं, तब वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां उनको बहुत प्रलोभन मिलते हैं और उसमें से किसी एक प्रलोभन में फंस करके वे पाते हैं कि वे अपनी सारी समस्याओं को पल दो पल के लिए या घंटे आधे घंटे के लिए या दिन दो दिन के लिए भूल जाते हैं। और जो जिक्र कर रहा था कि एक फिल्म जब इस पर बनी तो पूरे देश में वो फिल्म बहुत हाथों हाथ ली गई और उसने बहुत कमाई बॉक्स ऑफिस पर की। इसका मतलब यह है कि संवेदनशीलता मरी नहीं है।
इसका मतलब यह है कि हम दर्द को समझते हैं, अन्यथा वो फिल्म सिनेमा घरों में चलती नहीं। युवाओं ने ही उस फिल्म को पसंद किया, युवा ही उस फिल्म को देखने के लिए दौड़ रहे थे। आशय केवल ये है कि केवल थोड़ा सा सजग रह करके शायद हम न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, वरन अपने आसपास में इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सुनने के लिए वे शायद कहने के लिए कम आतुर होंगे, हम उनको सुनने के लिए ज्यादा बेताब हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और देवाशीष सर भी हैं, उनको सुनना एक सुखद अनुभूति होगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और देवाशीष सर को, बच्चों को, आपको सभी को सुनना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, और एक बार पुनः माधव विज्ञान महाविद्यालय को इतना सुंदर आयोजन करने के लिए बधाई और साधुवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके बाद अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर देवाशीष जी को। आप डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस हैं। आज के विषय प्रवर्तन के लिए आज जो हमारे बच्चे हमसे बात कहने वाले हैं उसको कैटलाइज करने के लिए मैं सर को आमंत्रित करूंगी। आमंत्रित हैं देवाशीष सर आप। कल्पना मैडम धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छा आयोजन, मतलब कल जैसे ही आपसे बेसिकली धन्यवाद अंजलि आचार्य मैडम को जाता है जिन्होंने मुझे फोन किया, और आपने उसके बाद उसका, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि बच्चों को जागरूक होना, जागरूकता ही इसका एक सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। बस हमें तो मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना, और आपका इतना बढ़िया मुहिम जो मध्य प्रदेश सरकार और जो भारत सरकार के अधीन मतलब बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, जो मतलब इंडिया जो ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, मैं यही मानता हूँ कि भारत को धकेला जा रहा है उस पर। और ये एक जो चर्चा है, चर्चा का विषय है, बच्चे जो अपने ओपिनियन और व्यूज रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, खास करके जैसे भरद्वाज जी ने सही कहा था कि हम लोग उनको सुन के क्या वो फील करते हैं, जिससे हम इस चीज को पॉलिसी मेकर्स तक ले जाएं। मैं प्रिंसिपल साहब वीरेंद्र गुप्ता जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कि ऐसा एक कार्यक्रम को किया। तो भरद्वाज सर, आपको भी सुना अच्छा लगा, और कल्पना सिंह मैडम आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ड्रग्स देखिए, पहले इफ वी टॉक अबाउट डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मेन मींस यू आर द ड्राइविंग फोर्स, बिकॉज यू विल टेक द लॉ अहेड. We are now old. We can make only policies and we can create, we can give the information. But the awareness, for creating awareness, you people are there. That what? And you all know what's happening. Because every day, if you just turn the pages of newspaper, go through periodicals, every day you will find that BSF has shot down one drone. And now the drones are not used for smuggling of arms or ammunition, they are used for drugs. So but they do their job. If the drone enters, they will drop their consignment, and you shot down after that. It's up to you, but the things are very difficult. So actually what we feel, or what personally I feel, the drugs of abuse is one of the curse of the development. So when we are developed, when our four corners are satisfied, so you need something new. पहले जब मैं छोटा था, और मेरे ख्याल से बाकी सर लोग भी एक राय रखेंगे इसमें, तब हमें कॉलेज में पढ़ना, कॉलेज जाना, एक कप चाय, एक समोसा, उसके लिए हम लोग तरस जाते थे. बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड. वी आर इनटू द पिज्जा एज, वी आर इनटू द बर्गर एज, एंड सी द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन दैट. So the thing is that the development has obviously some side effect. And second, again, I'm emphasizing on that, as we are developing, everyone knows that India is a nation of young generation. We are very young nation. India is a very young nation. So how to stop it? How to disturb its growth? पहले जब हम मारपीट करते रहते थे, अंडर डेवलप कहलाते थे, डेवलपिंग कहलाते थे, तो बहुत अच्छा था, दुनिया खुश थी. But in this present government and the present scenario, we can call ourselves developed. We are at par with the other developed nations. So रोकना तो है कहीं ना कहीं. And when we talk about we are the population of young India, we are young India. So we need to distract them.
There are many ways of distraction. One is your mobile. Mobile is useful as well as destructive. So this is one of the mean of destruction. Another, the best way to distract is to just mobile. The thing is that you can anytime you can disconnect with it. It's not kind of it's not kind of addiction. You can say it's a kind of emotional addiction, that sort of. But if you talk about physical addiction, it's very very difficult to remove physical addiction like that. And these are drugs. So basically, what I would like to hear from you all is that just categorize your thoughts, that what you opine on, because I am giving you three things which you should talk about. It's a drugs of abuse, which is the main thing, drugs of misuse, and substances of abuse. These three things you just try to correlate with them. Only don't involve yourself into the drugs of abuse. It's the drugs of abuse, drugs of misuse, and substances of abuse. So these are very important things which we have to. And one of the important things which I would like to share is that earlier, during my initial days of research, cocaine was very difficult to have in India. But now cocaine has a market in India. By having cocaine in India, it's just indicates that the purchasing power for drugs has increased a lot. So जैसे वो होता है ना, मैं साइकिल से आया, अब मेरा बेटा पल्सर चलाता है, पता नहीं उसका बेटा क्या चलाएगा, वो सारी चीजें हैं कि now the purchasing power of the youth of India has increased a lot. So I think I won't be speaking more on this. I would like to, जैसे भरद्वाज सर ने बोला कि I would like to hear you all, and then in the final we will sum up whatever directions I will receive from Kalpana madam. We will be doing on. Over to you, Kalpana madam. Thank you very much, sir. So now we quickly pass on to the phase which we were eager to listen to, and that is student interactions. The name of the event is also Speak Up event, where we just want to listen to the young students and the young minds across the states. इस स्टेट के हर कोने से हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम सुनना चाहेंगे और उनके उन यंग विचारों को सुनना चाहेंगे. सर ने आपको अपने कैटलाइजिंग थॉट्स में 3 आपको एजेंडा के बिंदु दे दिए हैं कि जिसको एक सेंट्रलाइज करके, जिसको कोर में रख के आपको बात करनी है. मैं यहाँ कह देना चाहूंगी प्रत्येक स्टूडेंट को, फॉर एवरी स्टूडेंट्स वी हैव गिवन 3 to 5 minutes. 5 minutes पे मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी. आप मैक्सिमम इतना ही समय लें, इससे ज्यादा समय ना लें, सो दैट एवरीवन कैन स्पीक. एंड दूसरी बात जिस चीज को यहाँ कहना चाहेंगे, दिस इज institutional platform. Please refrain from using any names. कोई भी नाम, कोई भी सेलिब्रिटी का नाम या किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम या किसी राजनीतिक दल का नाम लेने से यहाँ बचें. यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड यूज ना करें जो आपके लिए या किसी और के लिए सही ना हो. Please be respectful to everyone which you are mentioning in your thoughts and which you are saying. With this, I would just like to invite our first. मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूट्स के नाम आपके पास आ रहे हैं ये क्रोनोलॉजिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है as per the city. So the first city is B for Bhopal. So I would just like to invite our participants from Bhopal. That is, the first college is Institute of Excellence in Higher Education, and I would like to invite Miss Renuka from IEHE Bhopal. Renuka, are you there? Please switch on your audio and speak. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone present here. Renuka, you can switch on your video also. Okay. Welcome. Good afternoon. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone present here. It's a great honor to be part of this program. As we know, the objective of this program is to spread awareness about legal provision and policies and the harmful effect of drug of abuse. It aims to educate parents, teachers, students, and students about the danger of substance of abuse and to create awareness among chemists to monitor the sale of prescribed drug to children and youth. As we know, substance of abuse or drug of abuse are substances which are used in excessive amounts such as alcohol, pain medications or illegal drugs which can lead to physical, social or emotional harm.
There are many drugs like amphetamine, cocaine, marijuana, MDMA, barbiturates, which are highly consumed by the youth today. Many people do the misuse of prescribed medicines also, which can cause severe illness like memory impairment, judgment and decision making can be problematic, lack of interest in personal hygiene, withdrawal syndrome, isolation, depression, loss of appetite, etc. In 2018, prescribed medicines like painkiller and opioid become a problem in United States as the death reaches two by third by drug overdose. People who have a bad family structure, early drug use, or mental disorders and suffering from relationship problems start consuming substance of abuse, and as we know, overdose of any substance can result in death. Forensic experts and scientists play an important role to examine these drugs and help to know more about the drug. But today, controlling the availability and use of drug are becoming challenging as the cases are increasing, the pressure is also increasing, which requires more manforce as new synthetic drugs are made day by day, so it gets hard to understand it is challenging for us. However, prevention is better than cure. We can prevent it by awareing parent, teacher, student about the drug, and also by education and counseling we can help a person to face problem and stress and help to accept disappointments and failure is a part of life. If a person seeking for help, then doctors and NGOs would be a great help for them. Thank you. Thank you very much, Renuka. Now I will invite Mr. Divyansh Malviya from IEHE Bhopal. Uh, Good afternoon, everyone present here. Hope you are having a good day. So, we all know we are here to talk about the ongoing drug abuse scenarios in India and in prevention. As we all know, drug abuse is a serious problem that affects people of all age and background. In India, the problem is particularly acute to among young people. According to recent study, over 10% of Indian youth have yet used drug at least once. There are many reasons why people abuse drugs. Some start using drugs to cope with stress or emotional pain. Others are curious about the effects of drugs and they experiment with them. Still, others are introduced to drugs by their friends and family members. In India, like any other country, the battle against drug abuse required a multi-phase approach, including prevention, treatment, and enforcement. Forensic experts play a crucial role in enforcement aspects, helping to unravel the complex web of drug-related crimes and providing valuable evidence for prosecutions. However, forensic experts in India encounter many challenges in their pursuit of justice. One of the primary obstacles they face is the ever-evolving nature of illicit drugs. Criminal organizations continuously develop new synthetic substances and modify the one existing ones to evade detections. This rapid evolution poses a significant challenge for forensic laboratories and experts who must stay abreast of the latest drug trends, analyze substance accurately, and identify new compounds with limited or no reference materials. Another significant challenge lies in the sheer volume of drug-related cases that forensic experts must handle. The workload can be overwhelming, leading to backlogs in analysis and delay in court proceedings. As a result, the timely delivery of justice is hindered, and criminals may escape punishment due to administrative bottlenecks. It is essential for the government to allocate adequate resources to forensic laboratories, including advanced equipment, training programs, additional personnel to enhance their capacity and efficiency. Forensic experts often face difficulties in accessing timely and accurate information, hindering their ability to connect the dots and dismantle integrate drug networks. Strengthening inter-agency cooperation and information sharing mechanism is crucial for enhancing the effectiveness of forensic investigations. Forensic experts in India face numerical challenges in their quest for justice, including the evolving nature of drugs,
heavy workloads, lack of coordination, evidence tampering, and limited research and development. In India, the government is taking some steps to address the problem of drug abuse. The Narcotic Control Bureau, or NCB, is responsible for enforcing drug laws and has been conducting raids and arrests. The government has also opened drug treatment centers across the country. However, more need to be done to prevent the drug abuse in India. We need to educate young people about the danger of drugs and provide them with alternate activities, as we need to address the root cause of drug abuse, such as poverty, unemployment, and lack of opportunities. In conclusion, preventing drug abuse required a multi-phase approach that addresses various aspects of issue. It involves a combination of education, prevention programs, policy interventions, communication engagement, and service supports. Here are some key points to consider preventing drug abuse, like education and awareness, prevention programs, research and evolution, and so many. As we bring this speech to a close, let us carry the torch of knowledge, compassion, and unity, and lighting the path towards brighter tomorrow for all. Thanking everyone present here. Thank you very much, Divyansh, and thank you very much, IEHE. So, IEHE was all about the forensic angle for the prevention of this drug abuse, challenges from the forensic side, and also about that how this torch of knowledge can help in controlling this drug menace in the country and internationally too. Now we have the other college from Bhopal, that is Sarojini Naidu Girls College, Bhopal. So I would just like to invite Miss Shivali Dubey from Sarojini Naidu Girls College, Bhopal. Shivali, are you there? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. And I'm very grateful to for giving me the opportunity to introduce myself and to tell something about the drug abuse. Excuse me, Uh, Shivali, you can yes, switch on your video. yeah, I have opened my camera. I'm visible, ma'am. You are not visible, Shivali, but go I ahead. think, ma'am, there is some issue with my Okay, camera. go So ahead, go sorry for ahead. that. Okay, no issues, go ahead. Yeah. So basically, drugs are the substances that change the way of a person acts, feels, and behaves. So when we talk about the drugs are taken in forms of overdose. The term drug abuse is applicable when drug is used in overdose form. So drugs are both legal and illegal. Most people are use drugs illegally due to different reasons, like peer pressure, coping situations, or just for fun as well. So we have to do what our role is in this is we have to discuss the health risk and solutions to tackle the world drug problem, to provide evidence based prevention, treatment, and care. So basically our role is to because I'm a student of social work, so in my point of view we have to do the awareness program in backward areas, like mostly in backward areas and in slum areas, or in the areas of where people are not aware from the uh, problems. So we have to organize the camps and aware the people to how drugs affect their life and affect their whole life and their parents life. That's all about. We have to main thing is we have to do the awareness, because by awareing the people we can reduce the abuse of drugs. That's all about. Thank you. Thank you very much, Shivali. Now I would invite Miss Rakshanda Khan from Sarojini Naidu Girls College, Bhopal. Am I visible Rakshanda? now? Yeah. So, if you can quit today for a day, you can quit for a lifetime. A very hearty good afternoon to everyone. I'm honored to have the opportunity to speak with you all today. I want to start by thanking the organizers of this event by bringing together such a diverse group of students and professors from different colleges and backgrounds. I hope that our discussion today will be informative and engaging.
Today we gathered to mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. This day is an opportunity to raise awareness about the dangers of drug abuse and the importance of prevention efforts. It is also a chance to reflect on the ways in which stigma and determination can prevent people from seeking the help they need. By putting people first and strengthening prevention efforts, we can create a world where everyone has access to the care and support they need to overcome addiction and healthy, fulfilling lives. Drug abuse and illicit trafficking are major public health challenges that affect communities around the world. So they can lead to addiction, health problems, and even death. But these issues are not just a matter of individual choice or behavior. They are often a result of complex social and economic factors such as poverty, unemployment, and inequality also. That's why it is so important to approach drug abuse and illicit trafficking from a people's first perspective. Now, what does it mean to put people first when it comes to drug abuse and illicit trafficking? So, for me, it means recognizing that addiction is a disease and not a moral failing. It means treating everyone with compassion and respect, regardless of their substance use history. It means creating safe, supportive environment where people can feel comfortable seeking help and sharing their experiences. Unfortunately, stigma and discrimination are still major barriers to addiction treatment and recovery. As per the Central Government's Narcotics Bureau, alcohol is the most consumed drug. It is the most psychoproactive substance used by Indians nationally. So people who struggle with addiction are often labeled as junkies or criminals, so which can make them feel more ashamed and isolated. This may be discrimination, or it may be called as discriminated society in the workplace or other areas of their lives, which can make it difficult to access the care and support they need. It is really very unacceptable in today's date. So we need to work together to break down these barriers and create a world where addiction is treated with the same level of comparison and respect as any other disease. So one way to do this is by strengthening prevention efforts. We know that early intervention and prevention can make a world of difference when it comes to addiction. By providing access and proper resources and support early on, we can help the people to build resilience and develop healthy coping mechanisms. And another way to put people first is when it comes to addiction. So it is to create a more inclusive and supportive communities. This means providing access to addiction treatment and support services in all areas, including schools, colleges, workplaces, and community centers. It means educating people about addiction and breaking down stereotypes and misconceptions. So, on a concluding note, I'd like to say that focusing on prevention efforts, creating supportive communities, and addressing the root cause of poverty, we can create a world where everyone has resources and support they need to make healthy choices and avoid substance use. So, together we can build a brighter future for ourselves, our loved ones, and our community. So, thank you for your time and attention, everyone. So, let's keep up the good work. Thank you, Rakshanda. Thank you for being so clear in your versions and your views. Thank you very much. Thank you, Sarojini Naidu Girls PG College, Bhopal. Thank you very much. Now I invite another very prestigious college, that is Kamla Raja Girls College, Gwalior. So I invite Palak Srivastav, Miss Palak Sikarwar. Sorry, I'm sorry. I invite Miss Palak Sikarwar from KRG Gwalior. Good afternoon, ma'am. And good afternoon, sir, and good afternoon, all the friends. नमस्कार, मैं पलक सिकरवार कमला राजा कन्या महाविद्यालय की एमए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। ज्यादा भूमिका गढ़े बिना मैं सीधे अपने विषय पे पहुंचूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ये ऑनलाइन स्पीच का प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी संयोजकों को और संचालिका मैम को इतनी अच्छी पहल के लिए। बाकी अब मैं सीधे सीधे अपनी बात पर आऊंगी। सबसे पहले मैं केंद्र में लाना चाहूंगी आज की थीम को, पीपल फर्स्ट। तो इससे ये चीज निर्धारित होती है कि आप जो भी हैं, जहां भी हैं,
ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप लोगों से कितना कनेक्ट है, चीज ये मैटर करती है कि आप उनके बारे में कितना सोच रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हमारे इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, पर वो केवल नाम के लिए होते हैं, बस लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए। रियल लाइफ में वो आपको इतना हेल्प नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली आपको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई डिप्रेशन में है या फिर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए निजात पाने के लिए ऐसे जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। और इससे हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं महिलाओं का। घरेलू जो हिंसाएं हमें देखने मिलती हैं, तो लोग जब बाहर से ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करके आते हैं, तो उसका बहुत एक हद तक प्रभाव है जो महिलाओं को झेलना पड़ता है। और कोकीन, अफीम, भांग, ब्राउन शुगर, इन सब की तो तस्करी भी अब इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा भारत बीच में आ चुका है। इस साइड आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज मिल जाएंगे एशिया के, और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे राष्ट्र हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीच में से ट्रैफिकिंग होती है, जाते हैं ये ड्रग्स, तो इनको रोकने की जरूरत है। जो सीमाएं हैं हमारे देश की, उन पर चेकिंग प्रॉपर अगर होगी तो शायद ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। आज जहां हम अपनी साइंस की बुक्स में बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां जब ये अल्कोहल का फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है, तो साथ में ही एक नोट में ये भी दिया जाए कि इसके हार्म्स क्या क्या होते हैं, इनसे हमको क्या क्या हानि हो सकती है। और आज का युग तो डिजिटल युग है, तो जो लोग पढ़े भी नहीं है, उन्हें हम ग्राफिक्स दिखा के उनके माध्यम से ये जागरूकता ला सकते हैं कि यदि आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या आपको इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी बेरोजगारी के लिए, कि जब युवा, जैसा कि सर ने बताया था, देवाशीष सर जी ने, कि हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो एक युवा राष्ट्र है। और आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश की औसत उम्र 29 या 30 के लगभग है। तो बड़ी खूबसूरत पंक्तियां है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यदि राष्ट्र का युवा ही पथभ्रष्ट होगा तो फिर शायद उन्नति संभव नहीं है। और जहां तक कि हम देख रहे हैं, भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है और जल्दी हम लोग विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। तो ऐसे में हम युवाओं को चाहिए कि जो लोग पीछे रह गए हैं, हम उन्हें जागरूक करें, उनको समझाएं, उन्हें बताएं कि इन सब चीजों से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। और दूसरी बात, अपने स्तर पर भी इन चीजों को कम करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं इंगित करना चाहूंगी, आजकल एक शब्द प्रचलित है, माल, जिस शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं कि कोड वर्ड है इन सारे ड्रग्स के लिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बच्चे जब पार्टी करते हैं, तो वो लोग अपने पार्टी में ये मादक पदार्थ जरूर शामिल करते हैं, इनके बिना वो लोग नहीं मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी ये सब ना करें, और जो आपके साथ वाले कर रहे हैं उन्हें भी ऐसा करने से रोकें, क्योंकि इससे केवल आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आपके परिवार पर, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उन सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स होते हैं, ये इनको केवल चिकित्सा तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार अपन सब्जी में नमक डालते हैं तो वो स्वादानुसार रहे तब तक ही अच्छा लगता है। यदि ज्यादा नमक डाल दिया जाए तो सब्जी बेस्वाद हो जाती है। उसी प्रकार यदि आप इन ड्रग्सों का, मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल दवाइयों तक ही रखें, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से यूज करती है, जैसे नार्को टेस्ट हो गया, और हमारी सरकार भी कई सारी मुहिम चला रही है, जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, नार्को समन्वय केंद्र है। तो इस प्रकार की जो पहल आती है, हम सभी नागरिकों को चाहिए कि हम उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें गवर्नमेंट की हेल्प करें और जागरूकता लेके आए। अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि सबसे जरूरी है शिक्षा में इन सभी चीजों के दुरुपयोगों के कारण जो हानियां होती है उन्हें शामिल करना, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन होता है ना, यदि वो अच्छा होगा तो फिर बड़े होके हम किसी लत में नहीं लग सकते। और सर ने एक बात मोबाइल की भी बताई थी, तो मोबाइल भी आजकल एडिक्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हम युवाओं का ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं कि किस चीज की क्या क्या हानियां हैं। तो यदि हम करेंगे तो जरूर संभव होगा। धन्यवाद। Thank you very much, Palak.
Now I would invite Vaishnavi, Miss Vaishnavi Mughal from KRG Gwalior. और गौरी हैं क्या यहाँ पे from KRG, गौरी गर्ग? If she is not here, then Vaishnavi Mughal, KRG Gwalior. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity here. First of all, Jai Hind. A heartily good afternoon to everyone present over here. I am Vaishnavi Mudgal from Government KRG PG Autonomous College, Gwalior. Here, we all discussing about drug illicit trafficking. So, first of all, I am an NSS volunteer. On 26 June, we celebrated International Day of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking since 1988. And the theme of 2023 is People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. And every year, the government launches a new theme on this day. And as an NSS volunteer, we do many programs on drug abuse and illicit. And my own experience is so far is that we try to stop it, but that effort remains only an effort, because nowadays youngsters are mostly likely to use drugs like cigarettes very quickly. If we have to stop people from doing drugs, we have to show ourselves in high schools, colleges, universities, village settlements. What do they do? Because when people see its disadvantages from the front, they will feel the disadvantages caused by it. In NSS, we do many types of programs like de-addiction, drug-free awareness, rallies, street play, speech, and also poster makings, and many types of programs we do. When we take out rallies in slums and in various types of fields, so we see that the people who actually do that drug, they do not know that the drug they are doing, the drug they are addicted to their family and family members. What problems can and do they have? So it is necessary that people should have full knowledge about it, what diseases they and the people living around them get by consuming it. People consider drugs, cigarettes, bidi, like gutka as a means of entertainment and consume them continuously. The main reason for the increase of intoxication is in the society is that people do not have attachment towards each other. It is a major problem. They feel that if an unknown person is intoxicating in front of them, then they do not consider it is necessary to stop them. They think that if this person is intoxicated, then what does it mean to us? We do not know. When it comes to us, then we will see. For drug addiction, it is obvious that every person who is addicted to drugs will be prevented from harming us. We will be able to understand those harms that are happening, and only then our society, our India can become drugs free. And example I want to give. Today's breaking news. Today's breaking news is that a boy knew many languages and he was a guider. He died due to intoxication because he did not know the side effects of drugs. So there are many people who do not know how much harm is done to their lives and the lives of the people around them by taking drugs. No matter what the intoxication is, it causes economic, mental and physical harm to the people. Thank you. Thank you very much, Vaishnavi. And thank you very much, KRG Bhopal, for KRG Gwalior for putting your views and for just showing the mirror that how this menace of drug can be controlled. Is Gauri Garg from KRG Gwalior here? Gauri Garg from KRG Gwalior? No, she is not here. Okay. Then she is not available. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. So now we move on to the next college, and that college is from Indore. Holkar Science College, Indore. I would like to invite Mr. Akansh Dubey from Holkar Science College, Indore. Akansh from Holkar Science College, Indore. सभी को नमस्कार। मैं एकांश दुबे, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर का छात्र। एकांश, आप अपना वीडियो ऑन कर सकें तो कर लीजिए। मैम थोड़ा सा इशू है, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, चलिए। थैंक यू मैम। मैं एकांश दुबे आज के इस विषय पर अपने विचार आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहता हूं। आज का विषय जितना ही गंभीर है उतना ही शर्मनाक प्रतीत होता है, क्योंकि आज जब हमारा देश
एक विकासशील देश से विकसित देश होने की ओर अग्रसर हो रहा है, तब आजादी के 70 वर्षों पश्चात भी हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो कि काफी शर्मनाक प्रतीत होता है। तो इस विषय पर मेरे विचार कुछ इस प्रकार से हैं। आज हमारे समाज को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे शासन को, प्रशासन को इस विषय पर और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे देश का युवा, जिस प्रकार सभी मित्रों ने बताया कि आज हमारे देश का युवा 10% से ज्यादा संख्या में इस नशे के कारण नशे की लत में धुत है, और इस नशे के कारण अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को भी बिगाड़ता प्रतीत हो रहा है। वह अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो हमारे देश की रीढ़ है, जो हमारे देश का युवा है, हमारे देश का भविष्य बनाने वाला है, अगर वह इस प्रकार की आदत में लुप्त हो जाता है, इस प्रकार की आदत में लीन हो जाता है, तो यह हमारे भविष्य को अंधकार की ओर ढकेलने जैसा प्रतीत होता है। आज हम सभी को समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जैसा कि शुरू से सभी शिक्षकों ने और सभी साथियों ने बताया कि आज आवश्यकता है सभी को जागरूक करने की। आज आवश्यकता है सभी के परिवार तक इस बात को पहुंचाने की कि इस नशे के कारण वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस नशे के कारण हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर इस नशे का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज एक व्यक्ति अगर नशा करता है तो उसके कारण लगभग 3 पीढ़ियां उस नशे के कारण प्रभावित होती हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद एकांश। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी मिस अंकिता साहू, होलकर साइंस कॉलेज, इंदौर। Respected teachers and all my dear friends, a very hearty good afternoon to one and all present here. I, Ankita Sahu from MSc Final, present here to give a speech on World Drug Day, or we call it as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, we all know that today is World Drug Day, but what is the significance or importance of this day? This day is marked on 26 June every year to strengthen action and cooperation in achieving a world free of drug abuse. The aim of this year's campaign is to raise awareness about the importance of training people who use drugs with respect and empathy. The theme of this year's is People's First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen and Prevention, which aims to combat stigma and discrimination against people who use drugs by promoting language and attitudes that are respectful and non-judgmental. As we all know that world drug problem is a complex issue that affects millions of people worldwide. It is a very sensitive issue. The World Drug Report provides a global overview of the supply and demand of opiates, cocaine, cannabis, and new psychoactive substance, as well as their impact on health. Even in Indore, the percentage of male and female is 27% increase who consume drugs. The reason of the drug abuse is the loneliness, competition, and relation issues. The harmful drugs affect physical as well as mental health. It affects the brain, causes depression. It also causes lung damage, chronic cough, bleeding from the lungs, hallucination, anxiety, and many more. In pregnant women, it leads to miscarriage, birth defects, etc. If the drug is used in a large amount, it also leads to death. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) recognizes the importance of taking a people-centered approach to drug policies with a focus on human rights, compassion, and evidence-based practices. We are the youth and we have the power to stop these practices. If we make aware all the people about the dangerous and harmful effects of drugs, we can reduce the usage of drug. At the end, I want to say that
Your decision to kill your addiction will only become a reality if you believe and reinforce the fact that you have the capacity to do it. Thank you so much. Thank you very much, Ankita, and thank you very much, Holkar Science College, for putting up your perspective. Now I invite the students from Bherulal Patidar College, Mahu. I would like to invite Mr. Ankit Kumar from Bherulal Patidar College, Mahu, as I understand that Sneha Shukla is not there. So Ankit Kumar from Bherulal Patidar College, Mahu, I invite you. Mr. Ankit Kumar, I can see you. Mr. Ankit Kumar from Bherulal Patidar College, Mahu. Okay, so we move on to the next college. That is Jawaharlal Nehru Smriti College, Shujalpur. So is Miss Muskan Goyal here? Muskan Goyal, are you there? You were there. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so go ahead, Muskan from Jawaharlal Nehru Smriti College, Shujalpur. Okay. Okay, thank you, ma'am. So, welcome to all the professors. Here, I am Muskan Goyal from Government PG College, Shujalpur. Today, thank you for arranging this program, Madhav Science College. The day is a way we honor today is 26th June, and now we are celebrating this day to encourage people across the world to leave drugs and live a healthier life. To encourage people across the world to quit drug addiction and live a healthier life. We all know what is drug abuse, but drug abuse is a repeated and excessive uses of drugs. It involves compulsive and excessive intake of drugs over a short period of time, like alcohol, cocaine, methane, etc. Even it impacts on a person's mental health as well as physical health. Impacts are negative, causing a major damage to the brain. Drug abuse hampers a person's powers to practice self-control and interferes with their ability to resist the urge to take drugs. Drugs are initially taken out of choice, however, it becomes hard to resist them sooner than you realize it. It is difficult to recover from this problem, and even those who do stand a risk of developing in height. I have one line that can meaning of drugs accurately in one single line, that drugs take you to hell. Drugs take you to hell disguised as heaven. You might think that everyone takes drugs, but surprisingly, this has become a lifestyle of some people. Drugs are known to disguise realities, and this helps them cope up with certain situations. Of course, this is just a way of running away from oneself, but people who are prone to drugs would never understand that. At last, there comes a stage when a person who are prone to drugs would never understand that. At last, there comes a stage when a person who takes drugs becomes dependent on them and has to become on taking them due to avoid the pain of withdrawal symptoms. People, especially now youngsters, usually take to drugs abuse in order to overcome the stress caused due to following family issues, pressures at work, growing competitions in school and colleges, relationship problems, financial issues, feeling of emptiness. But it doesn't matter what was the problem. Now, whatever be the reason, it is essential to understand that drug abuse only increases our problems rather than solving them. It is just wise to stay away from it. Those who have already fallen prey to this problem can seek expert guidance to overcome it. Proper meditation, support from your loved ones, and strong willpower can take one out of the dark world of drug abuse. Thank you. Have a good day. Thank you very much, Muskan. Now I will invite Miss Matrika Nima. Matrika Nima from JNS Yes, Shuddalpur. ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I hope I Good have pronounced your name in the accurate manner. I don't know what is the Ma'am, actual it's a name. Matrika Nima. Matrika Nima. Okay, I was just thinking. So Yes, Matrika, ma'am. go ahead. Okay, ma'am. Good afternoon to all present over here. Myself, Matrika Nema, and I am here to talk about drug abuse. Now, as we all know that our 2023 theme for the Drug Abuse Day is
पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। इसका एक शॉर्ट में अगर मैं मतलब समझाना चाहूँ तो ये है कि जो लोग अभी मेंटली इल हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं जो ड्रग अब्यूज में उलझे हुए हैं, उन लोगों को हमें डिस्क्रिमिनेशन वाली नजर मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए उनके साथ। हमें हमें इस चीज़ पे बल देना चाहिए कि किस तरीके से हम इस ड्रग अब्यूज को प्रिवेंट कर सकें हमारी सोसाइटी से। Now, as we all are aware about the word drugs, these are the chemical substances that affect both our mind and our body. Even an overdose of the drug may lead to death. Now, the question arises, why do teenagers try drugs? तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि जो आजकल टीनेजर्स हैं वो क्यों ड्रग्स की तरफ जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो टू फील ओल्डर। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि जो बड़े लोग हैं जो वो ट्राई कर रहे हैं तो हमें भी वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो एक रीज़न मुझे ये लगता है कि उनको इतनी समझ होती नहीं है, बिकॉज़ वो लोग टीनेजर्स हैं, उन्हें थोड़ी मतलब इतनी समझ होती नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं कि जो बड़े कर रहे हैं वो हमें भी ट्राई करना है। सेकेंड रीज़न जो मुझे लगता है वो है टू फील कूल अमंग फ्रेंड्स। ऐसा होता है जनरली जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम किसी भी चीज़ के लिए यदि वो बोलते हैं तो हम उन्हें नो नहीं कर पाते हैं। तो एक ये रीज़न होता है ड्रग्स कंज्यूम करने का जो टीनेजर्स हैं उनमें। एक रीज़न हो सकता है बोर्डम। बोर्डम यानी जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, जब हम फ्री रहते हैं तो हम जनरली हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा जाता है। तो एक रीज़न मुझे ये लगता है। एक रीज़न मुझे लगता है वो है टू रिलीज़ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जैसे कि जब भी हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो जनरली लोग क्या होते हैं कि रात में अगर उन्हें नींद नहीं आती है स्ट्रेस की वजह से तो वो स्लीपिंग पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें उस स्लीपिंग पिल्स की जो है वो आदत हो जाती है, वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। ये एक तरह से नशा ही है मतलब। एक रीज़न जो मुझे लगता है वो है पेरेंटल ड्रग यूज़। अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली जो उनका चाइल्ड है, उनका जो बच्चा है वो भी ये चीज़ करेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं जैसे स्टिमुलेंट्स, डिप्रेसेंट्स और हेलुसिनोजेंस। जो स्टिमुलेंट्स होती है जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को स्पीड अप कर देती हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी। एग्जाम्पल जैसे कि कैफीन जो कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है। जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द कैफीन। सेकंड जो है डिप्रेजेंट्स। डिप्रेजेंट्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये हमारी जो ब्रेन है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है। इसका एक एग्जांपल जैसे अल्कोहल, हीरोइन, मैरिजुआना, ये कुछ एग्जांपल है डिप्रेसेंट्स के। एक और एग्जांपल जैसे कि हेलोसिनोजेंस। अगर हेलोसिनोजेंस को हम समझें तो ये मतलब जैसे जब इंसान अपने आसपास ऐसी चीजें इमेजिन करने लग जाए जो एक्चुअली वहां होती ही नहीं है, उस चीज को बोलते हैं हेलोसिनोजेंस। तो ये ऐसी ड्रग्स होती है। इसका एग्जांपल जैसे एलएसडी, एक्सटेसी, ये एग्जांपल्स है हेलोसिनोजेंस के। अब जैसे कि एक फैक्ट है, जैसे ये एस्टिमेट किया गया है कि अबाउट 32% जो फैटल कार क्रैशेस होते हैं वो इंटॉक्सिक मतलब जनरली जो ड्राइवर लोग जो नशा करते हैं, उसके मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसके बाद ड्राइव करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, उन उसकी वजह से होता है। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है यदि कोई हमें सजेस्ट करे कोई चीज़, जैसे हमारे डॉक्टर, जब हमारे डॉक्टर हमें किसी दवाई को सजेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो है वो पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डोजेज हमें देते हैं कि इतने टाइम तक आपको इसको कंज्यूम करनी है और इतना ही डोजेज आपको लेना है। लेकिन जब हम उसे मतलब ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं और जब हम अपने खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर की नाम मानकर हम अपने ही डॉक्टर बन जाते हैं और हम अपने हिसाब से उसे यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो चीज़ भी, वो जो दवाई है वो हमारे लिए ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाती है। ड्रग्स सिर्फ हम नशे से रिलेट नहीं कर सकते, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए वो भी ड्रग्स में कन्वर्ट हो सकती हैं यदि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाएं और डॉक्टर की ना माने तो। कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी डेथ हुई थी ड्रग्स की वजह से, जैसे कि कॉरी मॉन्टी, वो बहुत ही फेमस एक्टर थे और उनकी जो डेथ का कॉज था वो था टॉक्सिक मिक्सचर ऑफ हीरोइन एंड अल्कोहल। उनकी एज जो थी वो 31 ईयर्स थी। और एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी जिनका नाम था माइकल जैक्सन, जिन्हें हम सभी जानते हैं, वो एक बहुत ही फेमस पॉप सिंगर और डांसर थे, जिनकी जो डेथ है उसका कॉज था कार्डियक अरेस्ट, एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन
तो ये कुछ सेलिब्रिटीज थे जिनकी जो डेथ थी वो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स की वजह से हुई थी। अब हमें पता है कि जो ड्रग्स कंजम्पशन है उनके कोई भी एडवांटेजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं। जो क्राइम्स होते हैं ड्रग्स की वजह से, वो जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, थेफ्ट, ब्रेक एंड एंटर, रॉबरी, मर्डर, सिर्फ यही सब डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसका कोई भी एडवांटेज नहीं है ड्रग कंज्यूम करने के। रिजल्ट क्या होता है? या तो जेल होती है या मैसिव लीगल फाइन्स लगते हैं। ट्रबल बिकमिंग एम्प्लॉयड, यदि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जिस वजह से। फेल्ड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग जाती है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद एक जो सबसे खतरनाक जो इसका रिजल्ट है वो है डेथ। At last, I want to say that drug abuse is preventable and drug addiction is a treatable disease. यदि हम चाहें, यदि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम इस चीज को हम इससे फ्री हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं वो चीज। जो मेन चीज हमारे अंदर है वो होनी चाहिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि हमारे अंदर खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कोई सामने वाला हमारे लिए वो चीज नहीं करेगा। मतलब कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम उस चीज से बाहर आए, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। एक चीज इन्वॉल्वमेंट इन अल्टरनेट एक्टिविटी, अगर हम दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर ले खुद को, तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि खाली दिमाग रहता है तो हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक जो रीजन है, बिल्ड मेक पॉजिटिव फ्यूचर प्लान्स, यदि हम अपने पॉजिटिव फ्यूचर प्लान्स बनाएं, हम सोचे कि हमें ये करना है वो करना है, तो मतलब हम काफी हद तक इन चीजों से दूर रहेंगे। एक चीज, सराउंड योरसेल्फ विद फ्रेंड्स हु डिसअप्रूव ऑफ ड्रग्स, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो इस चीज के खिलाफ हो, ना कि ऐसे फ्रेंड्स जो हमें प्रोवोक करे कि तुम ट्राई करो। सॉल्व दीज इश्यूज विद प्रोफेशनल, स्कूल काउंसलर की हेल्प ले। तो ये जो सभी चीजें हैं, यदि हम ट्राई करें तो ऑब्वियस मतलब डेफिनेटली हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello. Actually, I was just having some internet issues. So may I know that Carnegie, because I was out, Carnegie Thakur has spoken? No, okay, I think Matrika was speaking? Yeah, Matrika was continuing. Matrika Yes, Nima ma'am. was continuing. Okay, She okay. finished. Thank you very much. Finished. So, thank you from we have completed. That means this JNS Shujalpur has completed. Now, I would just like to invite Kalidas Girls College Ujjain. So, I would invite Miss Carnegie Thakur from Kalidas Girls College Ujjain. Carnegie from Kalidas Girls College Ujjain. And then Avantika Gupta from Kalidas Girls College Ujjain. Can we have any of them? Carnegie or Avantika? Yes, ma'am. Okay, Carnegie is there. Okay, go ahead, Carnegie. सर्वप्रथम तो माँ शारदा के चरणों में नमन और यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा मैं कर्णगी ठाकुर कालिदास कॉलेज से हूँ, यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं। हमारा भारत देश वह देश था जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, पर यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज हमें नशा मुक्ति दिवस मनाना पड़ रहा है। पर एक्चुअली अगर हम देखें तो इसे सुधारने की पहल भी हमें ही करनी पड़ेगी। नशा समाज के लिए बहुत घातक है। यह वह मीठा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इससे व्यक्ति का शरीर, धन, मन सभी नष्ट हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का मनोबल, शरीर बल, धन बल समाप्त हो जाता है तो मेरे हिसाब से वह हमारे देश के लिए, परिवार के लिए एक मृत के समान है। ऐसा व्यक्ति समाज, परिवार, देश के लिए कैंसर के रूप में, कैंसर के समान है। और हम सभी जानते हैं कि कैंसर हमारे लिए कितना घातक है। हमारे देश में नशे का उपयोग सूक्ष्म मात्रा में दवाई के रूप में किया जाता है और यह हमारे लिए उपयोगी भी है, परंतु चूंकि हमने सबने सुना है कि अति सर्वत्र वर्जते, आजकल हमारे देश के युवा नशे का उपयोग इतनी अत्यधिक रूप से कर रहे हैं कि वह उसके आदी बन चुके हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि 1760 में हमारे देश में पहली बार शराब पी गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली शराब की दुकान 1760 में कलकत्ता में एक अंग्रेज है रॉबर्ट क्लाइन ने खोली गई थी। वहां पर उन्होंने कई भारतीयों को, अत्यधिक भारतीय लोगों को शराब पिलाई। सोचिए
1760 के पहले तो हमारा देश नशा मुक्ति था, नशे का कुछ नाम ही नहीं था। परंतु अंग्रेजों ने इसे भारत में बहुत बढ़ावा दिया और इसे एक फैशन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि नशे से जो है हमारा तनाव कम होगा, हमारी पीड़ा कम होगी। पर आज हमारा देश विश्व भर में योग के लिए प्रसिद्ध है। हम योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब योग के माध्यम से निरोग रहा जाता है, तो यह भ्रांति हमें दूर करनी चाहिए कि नशा दुख को दूर करता है। अंग्रेज तो चले गए, पर कुछ कुरीतियां हमें दे गए हैं और इसकी पहल, इसे समाप्त करने की पहल हमें ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर हम कितनी भी पहल कर ले, परंतु जब तक एक युवा अपनी इच्छा शक्ति को जागृत नहीं करेगा कि मुझे नशा छोड़ना है, तब तक ये पहल शायद इतनी कारगर नहीं होगी जितनी हम सोच सकते हैं। अगर नशे से मुक्ति पानी है, तो व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति जागृत करनी चाहिए। नशा मुक्ति अभियान को रोकना या फिर इस योजना, मतलब नशे को रोकना सरकार की मजबूरी हो सकती है, परंतु किसी व्यक्ति की मजबूरी नहीं हो सकती। यह सिर्फ इच्छा शक्ति से संभव है। व्यक्ति, आजकल तो हम देखते हैं बीड़ी सिगरेट सभी के उस पर लिखा हुआ था कि भैया इससे कैंसर होता है, तो क्यों, जब हमारे लिए घातक है तो हम क्यों उसे ग्रहण करते हैं? क्योंकि हम इसके आदी बन चुके हैं। और अपनी आदी, जब ये हम नशे के आदी हो चुके, तो इसे समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी इच्छा शक्ति ही है। परंतु एक मैं उपाय देना चाहूंगी कि नशे से बचने के लिए युवाओं को सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ खेलों और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। जब व्यक्ति राष्ट्र निर्माण और खेलों से जुड़ेगा, तो वह तनाव और इनसे दूर रहेगा और नशे से बहुत दूर रहेगा। तो मैं सभी युवाओं से यह निवेदन करती हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखें। और नशा हमारे परिवार के लिए, देश के लिए बहुत घातक है। यदि हम नशे को अपनाएंगे तो हमारा देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हमें विश्व गुरु बनना है और नशे को दूर भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कार्नेगी। और इसके पश्चात आमंत्रित करूंगी कालिदास कन्या महाविद्यालय से ही मिस अवंतिका गुप्ता को। अवंतिका जी। Yes, ma'am. ओके, गो अहेड अवंतिका। Okay, ma'am. Thank you. Recovery is not for people who need it. It's for people who want it. Good afternoon, everyone. I, Avantika Gupta, a student of Government Kalidas Girls College, Ujjain, is here to express my views on drug abuse and illicit trafficking. Drugs. Nowadays, almost 10 years old naive child is also aware of this term. Then too, I want to give a basic intro about it. They are the chemical substances which have an effect on our body and are of two types. First, legal, that is, they are used for medicines, and second, it is illegal, used to get state of being intoxicated. And here we are to discuss about illegal drugs and fatal consumption of illegal drugs. It has adverse effect on our body, both physically and mentally. It also attracts various diseases and make the person depressed. Maximum of the drugs nowadays are consumed by students in various ways, such as by drinking, smoking, injecting, or eating. Students may consume it out of fun or various reasons, but it is not no more fun after one gets addicted to it. Initially, the drugs are sold to students for free, and gradually, when they get addicted to it, they start buying and consuming it. And even eventually, the students also become part of their network. There are many reasons for one to take this major step. Taking of drugs, such as lack of emotional support, poverty, family problems, it becomes like a vicious circle of the drug addicted students from which they seems to find no escape unless the society comes for their rescue. I therefore request all the students to refrain themselves completely from the consumption of drugs before it destroys their health, future, and take away their lives. Don't even try to touch or come close to them. Drugs can even destroy a complete generation. So think wise and act smart. Shape your future, which seems bright and full of achievements. I want to conclude by saying that drug abuse should be an absolute no for all. Drugs may look attractive initially, but it has the capacity to destroy the future of a person. Remember that our country needs us.
and we are its future and harbinger of progress. Thank you. Thank you very much, Avantika. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so I would, Uday and Shalini are not here. Uday, are you here? Yes, ma'am. Then speak up because you're. I'm just announcing your names 2-3 times, so you can speak. It's your turn. And Okay, ma'am. Shalini Makwana, are you there? Yes, ma'am. Okay, so Uday, you start speaking. Then Shalini can speak, and then we can have concluding remarks. I Okay, hope Uday I'm Singh audible Chauhan. and visible, ma'am. I hope I'm audible and visible, ma'am. Yeah, you are audible. Please go ahead. Okay. Honorable dignitaries, respected professors, fellow youth students, and esteemed guests. Myself, Uday Singh Chauhan, MSc 4th semester student from Government Madhav Science College, Ujjain, which is accredited A++ through NAC. It is certainly a privilege to address such a knowledgeable and diverse audience in the state level student exchange activity entitled Speak Up, which is organized by the Internal Quality Assurance Cell MVM. The title of my discourse will be Empowering Youth, a Catalyst for Combating Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking. Today I'm speaking in front of you with a resounding belief in the power of the youth. He possesses an untapped potential, an indomitable spirit, and a relentless determination that can truly change the world. It is within this conviction that I address you today to shed light on a pressing issue that affects our communities, our societies, and our future, that is drug abuse and illicit drug trafficking. Just imagine a world where the dreams of our youth are not shattered by the allure of drugs. Envision a society where our future leaders, artists, scientists, and entrepreneurs are not held hostage by the destructive grip of addiction. This envision is not a far fetched fantasy, dear young friends. It is a tangible reality that we together can shape. As we gather here, we come together with a common purpose to advocate for a society that places people first, aiming to stop stigma and discrimination and strengthen prevention.
Drug abuse and illicit drug trafficking are grave issues that plague our society, impacting individuals, families, and communities across the globe. Substance abuse has the power to shatter lives, derail dreams, and weaken the fabric of our society. It knows no boundaries. It affects people from all walks of life, irrespective of their age, gender, or socio-economic background. Today, we raise our voice against this menace with this firm belief that prevention is the key to combating the drug crisis. Stigma and discrimination associated with drug abuse further exacerbate the challenges faced by those struggling with addiction. Instead of offering support and understanding, society often stigmatize and isolate individuals, making it even harder for them to seek help. We must recognize that addiction is a disease, and those suffering from it deserves compassion, empathy, and access to effective treatment. It is high time we unite as a society and adopt a people first approach. This means prioritizing the well being and dignity of individuals affected by substance abuse. It means acknowledging that addiction can happen to anyone, and it is not a moral failing but a complex health issue that requires our attention and support. I want to emphasize on this point, dear young friends, that's why I'm repeating it again that addiction can happen to anyone, and it is not a moral failing but a complex health issue that requires our attention and support. To stop stigma and discrimination, we must educate ourselves and others about the realities of addiction. We need to foster an environment of empathy and understanding where those struggling with substance abuse can find refuge without fear of judgment. While addressing stigma is crucial, prevention remains the cornerstone in our battle. We must strengthen preventive measures at every level, starting from schools, colleges, universities to our local communities, and even on our national policies. Education plays a pivotal role in prevention, equipping individuals with the knowledge and skills necessary to make informed decisions about substance use. By focusing on prevention, we can build resilient communities that are less susceptible to the risks of substance abuse. When we talk about prevention, we make it clear that it is very dangerous. We should involve communities. We should have such talks which we are having right now. We can reach a broader audience this way. Let us harness the power of social media, workshops, seminars to disseminate accurate information, debunk myths, and foster a culture of prevention. In conclusion, the fight against drug and illicit drug trafficking is not an individual battle, it is a collective responsibility. Let us pledge today on this International Day Against Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking that we put people first and stop stigma and discrimination. Together, we can create a society that supports, uplifts, and provides opportunity. This day reminds me of a poem of our former Prime Minister Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee ji. He says, कदम मिलाकर चलना होगा बाधाएं आती हैं आए बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा. Thank you all for your attention and may we join our hands in our relentless pursuit of a drug-free society. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Uday. Thank you very much for bringing in your perspective and the perspective of Mother Science College at Jain. That only the collaborative efforts can pave the way for the problems like drug abuse. And now we are going to listen the last participant today. That is Ms. Shalini Makwana from Mother Science College at Jain. After that, we will take concluding remarks from the expert today, that is Professor Devashish Bosji from Department of Forensic Science, Hari Singh Gaur University. So Shalini, the stage is yours for 5 minutes. Okay. Ma'am, am I visible or audible? Yeah, you are visible and audible. Yeah, ma'am. So good afternoon, everyone. First of all, I express my heartfelt gratitude towards ma'am for giving me this wonderful opportunity. And I also am with you to honor.
Hello. Actually, weather is not conducive today, so that is why internet is also creating troubles. Shalini, you are not audible now. Shalini, can you hear me? Okay, then we can move ahead and take concluding remarks from Devashish sir. Devashish sir is with us. Sir, I invite you for your concluding remarks. Hello. Yeah, sir. Sir, I invite you for your concluding remarks, sir. Thank you, madam. It was a very nice presentation by all the students. Very good. I really felt very good that the students from different colleges of this cluster are really concerned about this creeping problem, the problem which our youth are facing. They did some good homework regarding presentation. Regarding first, the presentation was very good, but just in presentations, try to just general information kind of thing, which I would like to disseminate to all the students, that try to switch on your camera. Because we have to be very, suppose you are appearing for some, because most of the companies, the hiring companies are now moved toward online kind of mode. In that, you cannot give excuse that we have some network issue and all these things. So this is the problem. So try to have a second line, something like that, until and unless it's a catastrophic scenario prevailing over that part. So this is one thing. And please don't try to read. This is what I observe. Someone keeps on reading the thing. So don't try to read, because try to be very extempore and try to be very normal. जस्ट जैसे आप लोग नॉर्मल मंच पे बोलते हैं वैसे ही बोलने का वो करिए, क्योंकि कई बार ये लगता है कि कंप्यूटर पे हैं तो कोई देख नहीं रहा है, पर ये इनकी दृष्टि ज्यादा अच्छी होती है. A very good presentation about the scenario. Certainly, some of the students did exceptionally well. Starting from the beginning, they have, yes, forensic science has some importance, but awareness is something different. We have to create awareness. Yes, regarding testing, we have to be very clear that how to test. You have also talked about the de-addiction camps and all these things. We have to still work in that line. Especially Rakshanda Khan. Very good presentation. It was very good time, and it's a disease kind of thing, which we have to, and for disease we have to give treatment. Isolation doesn't hold uh, any reason for that. Again, I think Matri, Matrika, Nema, gave a good presentation. I like the presentation about came about the classification and all these things, and obviously Uday gave a very good presentation in that. And obviously, I think Shalini also started to give a good presentation, because from the starting you can make out. But overall, okay, what I feel that you gave a good overview about what's happening, what our country is facing. So this is basically the drugs problem. Is basically we have to think, because poverty is not the reason for drug of abuse. Um Poverty may be one of the reasons. Yeah, alcoholism, you can basically say it's a poverty or some kind of thing, but poverty doesn't. It leads to poverty. That you have to make sure that all kind of abusive substances, any kind of abusive substances which which makes you physical dependent, okay, that you have to be very clear. What are those substances which make you physically dependent?
again, another is that this is not only making the physical dependence.